In the heart of rural India, where education is often the only beacon of hope, millions of children still lack access to basic digital literacy. In many rural government schools, computers are either scarce or completely unavailable, leaving students unprepared for a world that is rapidly advancing in technology. For these children, the journey of education is already filled with challenges. The digital divide significantly limits their exposure for technology and hinders their ability to compete in today's digital-first world. Recognizing this urgent need, eVidyaloka has designed the EmpowerEd program in collaboration with Microsoft, bridging the digital divide and empowering girl children in KGBV residential schools with transformative learning opportunities. This initiative brings digital learning and computer education to the most remote Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, offering girl students in grades 5 to grade 9 their first hands-on experience with technology and opening new doors to learning. 6 से 8 तक मेरी 100 बच्चियां हैं जो इस एजुकेशन से एजुकेटेड हो रही हैं, जिनको लैपटॉप भी मतलब चलाने टच करने नहीं आता था। उससे हमारे एक बच्चियां मतलब उसके थ्रू बहुत ही अच्छे से सीख रही हैं। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है और बच्चों में बहुत प्रोग्रेस भी है। They begin from understanding the basics of the computer, then are introduced to coding and move on to learning the concepts of AI. The program connects classrooms with volunteer teachers from around the world, allowing students to engage in interactive sessions, ask questions, and receive personalized guidance. I am a volunteer teacher at eVidyaloka and I teach computer science. यूपी के एक छोटे से गांव डुमरियागंज में एक स्कूल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो उसके क्लास 8 के बच्चों को मैं कंप्यूटर साइंस सिखाता हूँ। आई टीच देम अबाउट मालवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कोडिंग क्या होती है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की जानकारी देना मेरा काम है। मैं eVidyaloka की तरफ से एक वॉलंटियर टीचर हूँ। क्लास 8 के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्सुकता है सीखने की। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मुझे भी सोचना पड़ता है कभी कभी। ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯೂಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ವಿದ್ಯಾಲೋಕದ ಈ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು। Class assistants play a crucial role in facilitating these sessions, supporting students and teachers, following up with practical classes, and ensuring that every child receives the attention they need. वॉलंटियर टीचर्स जो हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाते हैं, उनके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीच में हमारी EmpowerEd के थ्रू एक ट्रेनिंग भी की गई थी, जिसमें हमें कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज दिया गया था, जिससे हम बच्चों को और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। To make learning accessible, eVidyaloka equips schools with essential digital infrastructure, including internet connectivity, smart devices, and laptops for student practice sessions. This ensures that children can explore technology freely without limitations, fostering a dynamic and immersive learning experience. This initiative sparks curiosity, nurtures problem-solving skills, and builds confidence in young minds, empowering them for a brighter future. For many children, this is their first time using a laptop, handling a mouse, or typing on a keyboard. मैं पहले लैपटॉप नहीं चलाती थी। मुझे यहाँ आके इस स्कूल में मैंने लैपटॉप चलाना भी सीखा और मुझे लैपटॉप चला के जो खुशी मिली वो बहुत अच्छी मिली। ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಥೇರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 4,557 girls from 30 KGBVs are being empowered with digital skills through this program. 127 volunteers have delivered 1,51,398 child learning hours. eVidyaloka, in collaboration with Microsoft, has also developed comprehensive study materials on basic computer skills and coding fundamentals. These resources, available in both English and regional languages, ensure that students can learn in a language they understand best. हमें ऑनलाइन क्लास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ बुक भी मिली है। बुक हिंदी है, हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे eVidyaloka से कुछ बुक मिला है जो इंग्लिश है। मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और फिर इससे मुझे बहुत सारे ज्ञान हुआ है। By combining reading with hands-on practice, these materials provide a strong foundation in digital literacy, helping students grasp concepts more effectively and retain knowledge for the long term. I'm very thankful to the team Microsoft and eVidyaloka because they have given us an opportunity to learn how computer does works. More than just learning how to use technology, EmpowerEd is giving these children a head start in an increasingly digital world. While the students have just started on their digital education journey, the 3-year program ensures that students gain deeper knowledge and skills with each passing year. Together, Microsoft and eVidyaloka are bridging the digital divide, ensuring that every child, no matter how remote their village, has access to the tools and knowledge needed for a brighter tomorrow.